My dear students, I welcome you again. We'll be discussing the third lecture of plant anatomy, that is permanent tissues. What are permanent tissues? Before we go deep into the subject, you must know what a tissue is. Yes, a tissue is a group of similar or dissimilar cells having common origin and performing similar functions. That's what we call as tissue. And two main types of tissues are meristematic tissues and permanent tissues. Meristematic tissues are those tissues which retain power of cell division, जो सेल डिवीजन की सलाहियत रखते हैं, जो डिवाइड कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक. उसी का अपोजिट है permanent tissues, those tissues which have lost power of cell division, जो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं नाम permanent tissues. So permanent tissues are those tissues that have lost the power of cell division, जो डिवाइड कर नहीं सकते, ऐसे tissues का नाम है permanent tissues. दो मेन किस्म के permanent tissues क्या है हमारे पास? एक को हम बोलते हैं नाम simple permanent tissue, simple permanent tissue and complex permanent tissue. क्या है सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू? सिंपल परमानेंट टिश्यू वो परमानेंट टिश्यू हो गया जो बना हुआ होगा एक ही किस्म के सेल्स का. सारे सेल्स इस ग्रुप में, इस टिश्यू में एक जैसे होंगे. सिंपल परमानेंट टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ सेल्स, ऑल सेल्स आर अलाइक. And complex permanent tissue, it is composed of different types of cells. A tissue having same types of cells is called simple permanent tissue, and a tissue having different types of cells is called as complex permanent tissue. For example, यहाँ लिख लीजिएगा. It is a group of cells. It's a tissue, but all cells are alike. When a tissue has same types of cells, similar types of cells, it's called simple permanent tissue. यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है? एक मास सेल्स का, लेकिन इस मास में क्या है? आधे सेल्स है स्फेरिकल, आधे है पॉलीगोनल, आधे है इलोंगेटेड. तो ये भी एक मास है सेल्स का, लेकिन इसमें डिफरेंट किस्म के सेल्स है. इसको हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू के तीन टाइप से अपने सिंपल परमानेंट टिश्यू के. एक को हम बोलते हैं नाम पेरेन्काइमा, दूसरे को हम नाम बोलते हैं कोलनकाइमा, और तीसरे को हम बोलते हैं नाम सिक्लरनकाइमा. पेरेन्काइमा, कोलनकाइमा and sclerenchyma, three subtypes of simple permanent tissues. और complex permanent tissue के दो types है, one is xylem, another is phloem. तो one by one हम पढ़ेंगे types of simple permanent tissues, फिर हम पढ़ेंगे next lecture में types of complex permanent tissues. तो start करते हैं यहां से simple permanent tissue के types से. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू. पहला क्या है हमारे पास? दैट इज कॉल्ड एज पेरेन्काइमा. अब हम सिंपल परमानेंट टिश्यू पे पहुंच गए. हम पढ़ रहे टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू. पहला क्या है? पेरेन्काइमा. पेरेन्काइमा के बारे में सीधी सादी बातें, बड़ा सिंपल है. टर्म पेरेन्काइमा वाज गिवन बाय ग्रीव. He also gave the term plant tissue. He is considered as the father of plant anatomy also. Okay. Then term parenchyma was given by Grew. And parenchyma, simply these parenchyma cells are living cells. And main function of parenchyma cells is the storage of food. तो एक स्टेटमेंट में बोलेंगे हम इनको, these cells are living and main function is storage of food. तो एक सीधी सारी बात में बोल सकते हैं parenchyma is simply living storage tissue. It is simply living storage tissue, means cells are living and main function is storage of food. Thus living storage tissue is simply parenchyma. ये cells कैसे होते हैं? parenchyma tissue के cells होते हैं living.
these cells are living, but they do not divide. Remember it, because we are discussing permanent tissues. Okay, these cells are living and they have thin cell wall. They are thin walled. Cell wall is thin, and this cell wall is composed of cellulose. सेल्यूलोज पॉलीमर है ग्लूकोज का. ग्लूकोज की लॉन्ग चेन को हम बोलते हैं पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट सेल्स का सेल्यूलोज. आगे हम पढ़ेंगे मे बी इन बायोमोलिक्यूल सेक्शन. Okay, cells are living. These parenchyma cells are living. They are thin walled. Their cell wall is thin. That's only primary cell wall basically exists, and they have cell wall composed of cellulose. And these cells are normally, we say they are normally isodiametric. These cells are normally isodiametric. They can be spherical, sometimes they can be polygonal, and intercellular spaces. That is like this. We have two cells here. We have two cells. One cell, second cell, third cell, fourth. We have here a mass of cells, for example. We consider the gap that is left between the two cells. This gap is called intercellular space. इसी को हम केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट में बोलते हैं void. We call it there void. void. Here we call it intercellular spaces. These intercellular spaces may or may not be present in case of parenchyma. It depends upon the cell shape. For example, here cells are polygonal. No intercellular space is left. Here cells are spherical. Intercellular space may be present. So we can say intercellular spaces. They may or may not be present. They can be present or they can be absent. It depends upon the shape of the cell. And why does this tissue occur? ये पैरेन्काइमा होता कहाँ है प्लांट में? ये किस ग्रुप में होता है? ये एल्गी में होता है, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में. प्लांट में कहाँ होता है एंजियोस्पर्म में? फॉर एग्जांपल रूट में, स्टेम में, लीफ में, फ्लावर में, फ्रूट में, सीड में, हर जगह होता है. आप बोले कहाँ नहीं होता है पैरेन्काइमा? ये हर जगह होता है. मीन्स ये दुनिया में छाया हुआ है प्लांट वर्ल्ड में. आई कैन से इट इज यूनिवर्सल इन प्लांट वर्ल्ड. इट इज यूनिवर्सल इन प्लांट वर्ल्ड. हर जगह दुनिया के अंदर मौजूद है. प्लांट्स में एल्गी में मौजूद है, ब्रायोफाइट्स में मौजूद है, टेरिडोफाइट्स में मौजूद है, जिम्नोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स में मौजूद है. सारे प्लांट के ग्रुप में मौजूद है, हर एक प्लांट के पार्ट में मौजूद है. आप देखेंगे रूट, स्टेम, फ्लावर, लीफ, फ्रूट, सीड, हर जगह मौजूद है पैरेन्काइमा. दैट्स व्हाई आई से इट इज यूनिवर्सल इन ऑकरेंस इन द प्लांट वर्ल्ड. और इसका मेन फंक्शन जो हमने ऑलरेडी बोला है, मेन फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा इज द स्टोरेज ऑफ फूड. कभी कभार इसमें फोटोसिंथेसिस भी हो सकती है जब ये क्लोरोफिल डेवलप करेगा. जिस तरह लीफ के अंदर जो दो एपिडर्मल लेयर्स के बीच लीफ में होता है मेसोफिल टिश्यू, वह असल में पैरेन्काइमा टिश्यू है. उस पैरेन्काइमा टिश्यू में होते हैं डेवलप क्लोरोप्लास्ट्स. उसको हम बोलते हैं तब उस वक्त जब हम पैरेन्काइमा सेल्स में देखेंगे क्लोरोप्लास्ट, तब हम इसको क्लोरेन्काइमा भी बोलते हैं. तो हम आगे तज़किरा देख सकते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट पैरेन्काइमा. तो खास बात है क्या है पैरेन्काइमा के रिलेटेड? शाबाश. वन, द टर्म पैरेन्काइमा वाज गिवन बाय एनग्रीव. ओके, parenchyma is simply living storage tissue. Cells are living, main function is storage of food, and these cells are living. They have thin cell wall, they are thin walled, and their cell wall is composed of cellulose. And this parenchyma, this tissue overall, intercellular spaces, the space between two cells, it may or may not be present. It depends upon the cell shape. And then why does it occur? It occurs everywhere in the plant world. I say it is universal tissue otherwise. The main function of parenchyma we already discussed, that is storage of food. Sometimes it can also perform photosynthesis when parenchyma cells develop chloroplast and all that. And next, number second type of simple permanent tissue is collenchyma. That is what we call as collenchyma. पहला था पैरेन्काइमा. तो टर्म पैरेन्काइमा दी थी एनग्रीव ने. तो टर्म कोलेनकाइमा जो है ये दी है शिल्डीन ने. शिल्डीन गेव द टर्म कोलेनकाइमा. पैरेन्काइमा को हमने एक सिंपली एक स्टेटमेंट में एक छोटी बात हमने बोली थी. पैरेन्काइमा इज लिविंग स्टोरेज टिश्यू. सेल्स आर लिविंग, मेन फंक्शन स्टोरेज.
कोलनकैमा के cells भी living है. These cells are also living. And main function of colonchima is mechanical support. Main function is mechanical support. So colonchima is simply living mechanical tissue. Means cells are living and main function of the cell is to provide mechanical support. Strength के plant. I say it is simply living mechanical tissue. Living mechanical tissue. We say parenchyma is living storage tissue and it is living mechanical tissue. Cells are living and main function of these cells is mechanical support. Then these cells, like parenchyma cells, they are living, they are also thin-walled, but they have thickenings. They are thick-walled at the corners, but they are thickened at corners. इसका मतलब क्या है, इसको मैं समझाऊंगा ऐसे सिंपल अंदाज में. फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए सेल हियर, पॉलीगोनल सेल. देखो ये जो कॉर्नर है सेल का, सेल तो लिविंग है, थिन वॉल्ड है, लेकिन ये कॉर्नर्स पे होती है इन पे डिपोजिशन. इनकी. दे आर thickened at corners like this. तो ये थिकनिंग किसकी बनी होते हैं कॉर्नर्स पे, सेल वॉल पे? इट्स कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोस, इट्स कंपोज्ड ऑफ हेमिसेल्यूलोस and it is composed of pectin. It's composed of cellulose, hemicellulose and pectin. So these cells, you see there is no void, no gap between the two cells. The intercellular spaces are completely absent in case of colonchima. पैरेन्काइमा कहाँ पाया जाता है? इट ऑकर्स एवरीवेयर. वी से इट इज यूनिवर्सल. लेकिन ये कहाँ पाया जाता है? इट ऑकर्स इन हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट सिस्टम. जो डाइकॉट्स के अंदर, मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स, टू ग्रुप्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स. डाइकॉट्स के अंदर जो सिस्टम होता है, बाहर होता है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे होता है फिर हाइपोडर्मिस. वो हाइपोडर्मिस डाइकॉट सिस्टम में बना हुआ होता है कोलनकाइमा का. तो हम इसको रिवाइज करते हैं ऐसे. Colonchima term was given by Schildeen. These cells are living and main function is mechanical support. That's why we say it is living mechanical tissue. And cells are living like that of parenchyma cells. And they are also thin-walled like that of parenchyma cells. But they are thickened at corners as it is shown here. They are thickened at corners. And this thickening is composed of cellulose, hemicellulose and pectin. And then we have, why does it occur? Parenchyma occurs everywhere, that's universal, but it occurs only in hypodermis of dicot stem. That's it. तो आगे हम देखेंगे इसका तीसरा टाइप, लास्ट टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यूज का, जिसको हम नाम बोलते हैं सिक्लरेन्काइमा. That is सिक्लरेन्काइमा. Sicklerenkaima term was given by Methanius. Term Sicklerenkaima was given by Methanius. And then, what is this tissue? This tissue is a dead tissue. Only dead tissue among the simple permanent tissues. That is what we call as Sicklerenkaima. These cells are dead and their function is same as that of colonchima. What is the function of colonchima? Mechanical support. Also, their function is mechanical support. I can say in simple words, Sicklerenkaima is dead mechanical tissue. In simple language, parenchyma is living storage tissue. Colonchima is living mechanical tissue. Sicklerenkaima is dead mechanical tissue. That means function of colonchima and Sicklerenkaima is alike. Both provide mechanical support, but colonchima cells are living cells providing mechanical support. Sicklerenkaima cells are dead cells providing mechanical support. Okay, these cells are dead. That's simple, that we know. And these cells have thick cell wall. इन पे deposition होती है cell wall पे किस चीज की? They have thick cell wall. Thick cell wall इन पे होता है. ये thick cell wall असल में होता क्या है? It's actually their 2-degree cell wall.
सेकेंडरी सेल वॉल इन पे होता है, जो पैरेन्काइमा में नहीं था, कोलेनकाइमा में नहीं था। यहाँ सेकेंडरी सेल वॉल होता है, एंड दिस सेकेंडरी सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ लिग्निन। लिग्निन का बना हुआ होता है। लिग्निन के बारे में आप पढ़ेंगे आगे बायोमॉलिक्यूल सेक्शन में। तो लिग्निन मौजूद होता है इन सेल्स के सेल वॉल पे, सेकेंडरी सेल वॉल पे। सेकेंडरी सेल वॉल इन केस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा इज कंपोज्ड ऑफ लिग्निन। तो ये लिग्निन की वजह से इनका सेल वॉल थिक बन जाता है, थिक सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल विच इज कंपोज्ड ऑफ लिग्निन। तो ये होता कहाँ है? पैरेन्काइमा कहाँ होता है? यूनिवर्सल, हर जगह प्लांट वर्ल्ड में। तो कोलेनकाइमा कहाँ होता था? दैट ऑकर्स इन हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट सिस्टम। व्हाई डज इट ऑकर? इट ऑकर्स इन हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट सिस्टम। हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट सिस्टम। वेरी सिंपल। तो हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, तीनों का अगर हम रिलेट करेंगे। हमने डिस्कस किया परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज आर दोज टिश्यूज व्हिच हैव लॉस्ट पावर ऑफ सेल डिवीजन। दो मेन किस्म है इनके, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ सेल्स, all cells are alike. Complex tissues are composed of dissimilar types of cells, different types of cells. Simple permanent tissue के तीन किस्में हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। शाबाश, इनको कंपेयर करेंगे। टर्म पैरेन्काइमा बाय एनग्रीव, कोलेनकाइमा बाय शाबाश शिल्डीन, स्क्लेरेन्काइमा बाय मिथेनियस। पैरेन्काइमा simply living storage tissue, कोलेनकाइमा living mechanical tissue, स्क्लेरेन्काइमा dead mechanical tissue. These cells are living, these cells are living,